बिस्मिल्लाह करते हैं. All right. Okay. Hi, everyone. Okay. So today I have a very special and a very kind guest who took out time for Mission Ligza, for me to talk to me. And we're going to talk about a very important topic. But before I go to that, let me just introduce her a little bit. Munize Zafar is a registered member of the British Association for Counseling and Psychotherapy, MBACP, and associate of the British Association of Art Therapists. So she was a visual artist first, and then she went on to become a therapist. So I think there's a wonderful correlation between in your work, Manize, between art and then the human psyche and how people react or act towards art as well. So I think that'd be very interesting to, when we're talking about our topic, maybe there could be some kind of a correlation to that as well, because I firmly believe that us as therapists, our diverse backgrounds kind of lead us to do the specializations and to do the meaningful work that we eventually do in the field of therapy. So I think that's pretty interesting. And of course, she's also a graduate of Stanford and has done various certifications from the Gottman Institute, Beck Institute, CBT, and the whole lot. Okay, so lovely to have you, and thank you so much for taking out the time to speak to me. I always appreciate that, considering how busy sometimes our work, tends to be. Today is the Labor Day, so I kind of, I'm grateful for you to take out that time. I want to talk about today. We are going to talk about social isolation and kind of addressing social isolation as well. Especially, growing up as adults, we tend to face it a lot more, especially in the generation that we have right now. The millennial generation that is becoming, they're in their in their 30s, so middle age, offshoot, and then 30s and what. So I think it's very interesting, and this is in my practice as well. It's a recurring theme where social isolation is coming up again and again. Where as an adult, it's now more difficult to make friends and to build that kind of connection that maybe we had when we were kids. So maybe we can go into that a little bit. I will define social isolation first for anyone hearing us right now. Social isolation is basically the objective the objective lack of social relationships, but it's also a subjective lack of psychological comfort and support that you have. So it's like an amalgamation of the two, and that leads to, and prolonged isolation and whatnot leads to a lot of mood disorders, a lot of personality disorders as well, or can trigger them. So we're going to talk about all of that. But Munize, what do you think in your, within your work, the clients maybe that you've talked to, the theme of loneliness? How would you define it, and how have you seen it come up within your own client work over the years? Thank you, Khaula, first of all, for this wonderful opportunity. I would prefer not to use a singular language for this podcast, so that just to make it more inclusive and so that Sure. everyone and anyone can benefit and learn from our discussions. Actually, when we talk about loneliness, loneliness is not just the state of being alone, it is the distress and the sadness while being alone. Otherwise, it would be solitude. So जैसे कहते हैं ना, जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा. So that is what I mean by isolation and loneliness. Acha, loneliness is not necessarily a bad thing. It is a painful but necessary part of human experience. और क्यों होता है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो हम later on discuss करेंगे. लेकिन ऐसा भी होता है कि जैसे you have many people around you, and you social isolation may be here, you can, but if you are a misfit and people around you are not aligned with you emotionally, socially, intellectually, ethically, even then we start feeling alone.
अगेन आई हैव अ, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्रेशन इससे बेहतर होता है कि जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिला। तो ये तो हो गई डेफिनेशन लोनलीनेस की। Do you think इससे आगे do you think जो last आपने कहा ना, do you think a part of it also originates from not, so even if you have those social relationships available to you, mama, baba, behin, bhai, and everything, and friends around you, the idea is that there is a loss of creating that connection as well, because I see this within kids as well growing up. Children these days now, because of maybe abandonment anxiety or any kind of trauma that they have faced, they as adults have a harder time building those connections that are really supportive in nature. So do you think there's a part of abandonment maybe or trauma, or CPTSD, complex PTSD as a child? Do you think that also contributes to loneliness as an adult? अच्छा, this question has two parts. एक तो इसका social aspect and then the psychological aspect, because you say children, so we'll have to explain childhood, and then you say now, which means today. So today, अगर अभी का social backdrop में इस, we'll divide loneliness into bits just for a better understanding. So अगर social backdrop देखा जाए तो बहुत सारी चीजें इस वक्त हो रही है जो पहले नहीं होती थी, उनकी understanding is going to help us. एक तो Khala, we have too much availability now, too much connectivity now. We have, in fact, we are living in an age of too much company. अब ये पैराडॉक्सिकल है ना कि टू मच कंपनी आल्सो लीड्स टू टू लिटिल प्रेजेंस। अच्छा, वी आर आल्सो सराउंडेड विद टू मेनी साइट्स, टू मेनी साउंड्स, टू मेनी स्टिमुलेंट्स, सो वी हैव आल्सो बिकम हाइपर सेंसिटिव टू प्रेजेंस। अब जब प्रेजेंस के लिए सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है तो जब गैप आएगा, जब जरा सा भी एक टाइम या स्पेस का पैच आएगा जिसमें किसी की प्रेजेंस नहीं होगी, तो यू विल ऑटोमेटिकली फील लाइक समवन इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। हालांकि जरूरी नहीं कि ऐसा हो, वो टाइम रिफ्लेक्शन के लिए, एनालिसिस के लिए नीडेड भी है। अच्छा, फिर और बहुत सारी चीजें हैं, खाली कनेक्टिविटी नहीं है। वी लिव इन अ टाइम एंड एज जब वी हैव गॉटन टू मच यूज्ड टू अवेलेबल स्पेस, हमारे पास लेजर टाइम भी बहुत ज्यादा है। सो ये जो वर्चुअल और रियल एक्सेस है ना टू टू मच स्टिमुलेशन, ये भी इसकी वजह है। फिर ये भी कि हम इस वक्त में, इस दौर में, वी हैव गॉटन टू यूज्ड टू hedonic pleasures, pleasure for the sake of pleasure, without any consideration for long term consequences of sense of fulfillment. एक ये भी इसकी वजह हो सकती है। और ये जो ज्यादा कॉन्सेप्ट समझने वाला है ना कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस फुलफिलमेंट। सो बहुत सारे, वी कैन कनेक्ट विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट द सेम टाइम and yet not feel fulfilled because deeper connections missing है। इसके अलावा and then so basically for the same dopamine uptake we have to up our game and we have to do more and more and more. वो एक quote था Alice in the Wonderland का कि in my kingdom you have to run as fast as you can just to stay in the same place. So ये भी हो रहा है, ये सब contributing factors हैं to our increasing sense of loneliness. अच्छा, इसके अलावा जो social media है, internet है, वो भी इसको contribute करता है because it breeds a certain amount of toxicity, unhealthy competition, unhealthy comparisons, feelings of inferiority, unhealthy perfectionism. हम इंटरनेट पे जाते हैं, हम लोगों को देखते हैं, we see only the projectable sides to their life. हम उनकी मिजरीज तो नहीं देख सकते, तो ये भी कभी नहीं हुआ था, ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। वी आर टू एक्सपोज नाउ, और ये ब्रीड करता है आगे से इंटॉलरेंस को, पोलराइजेशन को। हमारे एको चेम्बर्स बन जाते हैं, हम अपनी ही बात बार बार सुनते रहते हैं, नई बातें हमें नहीं सुनाई। So that's also one of the contributing factors. So as I said कि ये एक अजीब सी
पैराडॉक्सिकल सा ये एक्सपीरियंस बन जाता है जिसमें कि वी आर इन कांटेक्ट विद मेनी पीपल एंड येट वी फील डिस्कनेक्टेड. But Munise, if we look at let's say, the millennial generation, people born in their 80s or 90s, let's widen the time period a little bit. Those kids still had, and I absolutely am on board with you when you've highlighted all these other circumstantial and social factors that contribute towards, dopamine uptake and creating that kind of block between the person and the meaningful interactions, or the potential to make meaningful interactions with the rest of the world. However, we still had, and I also understand there's social media use, life unfortunately has become extremely plastic for the present generation. However, people born in their 80s and 90s, we still had that kind of space to make those meaningful connections. We did have that kind of exposure with our environment, whether it's the material environment or immaterial environment. We did interact with, so nature walks and talks and playtime and whatnot. And as a child, that does inculcate the value of building, being sound of what you need and what you lack, and then making connection out of that. Of course, there were cases around abandonment as well, and trauma and everything. That is a separate side of what causes loneliness. But some of us, so what do you think, like, why do you think a lot of people in their, let's say, middle age, midlife crisis, I guess we can call it, why is it that now, as adults, why do they find it so hard to build those connections these days? Is it just because of social media usage? Is it because of bad experiences? Is it bad because what do you think? It's because of many things. एक तो अगर हम इस वक्त का एसेंस देखें ना, zeitgeist जो है ना इस वक्त का, वो है hyper individualism. So we become increasingly dependent on becoming independent. हालांकि इंसान तो रिलेशनल बीइंग है ना, लाइफ इज एक्सपीरियंस्ड इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट्स एंड बीइंग्स. सो अब ये जो इस वक्त की जो फिलॉसफी है ना, इस अहद की है, इस दौर की, कि नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग और एनीवन, तो हम अपनी जिंदगी अपने साथ गुजारेंगे. अब ये हो नहीं सकता, बिकॉज लोनलीनेस में तो दो फैक्टर्स इन्वॉल्व है ना, दो पार्टीज इन्वॉल्व है. कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग तो है नहीं कि हम खुद से कर लेंगे या केक बना लेंगे. तो ये जो, क्योंकि हम कलेक्टिव्स में जीने के लिए पैदा हुए, या हमारा एवोल्यूशन भी वैसे हुआ है, वी आर नॉट सपोज्ड टू सर्वाइव जस्ट ऑन आवर ओन. अच्छा, सोशल मीडिया कंट्रीब्यूट करता है. वैसे तो किसी भी चीज की कोई एक वजह नहीं होती, वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं. लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पे कहा जाता है यू आर फाइन द वे यू आर, भाई व्हाट इफ यू आर नॉट फाइन द वे यू आर? इसका मतलब है आपने इस ग्रोथ की तरफ नहीं देखना, आपने डेवलपमेंट की तरफ नहीं देखना. यू शुड जस्ट बी कंसीडर्ड इनफ टू बी हैप्पी विद हु यू आर. अच्छा, अब जब आप रिलेशनल बीइंग को उठा के हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक कर देंगे, तो वो कहेगा मुझे किसी के साथ वक्त गुजारने की जरूरत नहीं, मुझे किसी के साथ, आई डोंट हैव टू पुट अप विद एनीवन, आई डोंट हैव टू लिव विद एनीवन. वो कोएग्जिस्टेंस के लिए जो नेसेसरी इंड्योरेंस है, वो हम क्यों करें? वी ऑल्सो फॉल प्रे टू इनर्शिया, आइडलनेस. क्या जरूरत पड़ी एफर्ट डीपर कनेक्शंस की, जब हमें एक किक मिल जाती है with टाइनी कनेक्शंस, हमारी सर्किटरी तो एक्टिवेट हो गई ना. सो अ व्हाइल अगो हमने, कुछ डेकेड्स पहले हमने इस बारे में बात की कि टू मच इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, लोकस ऑफ इवैल्यूएशन इंटरनल होना चाहिए, एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए. सो एक्सटर्नल वैलिडेशंस को इंटरनल करके आए. सो बट the problem is that it's a spectrum. Too much involvement and intrusion may be potentially annoying or regressive, but too little involvement by anyone around you is also the other extreme. It's the other end of the spectrum, which is also very detrimental to human existence. Absolutely, absolutely. तो ये इसकी दूसरी वजह. साइकोलॉजिकल रीजंस पे हम थोड़ा सा बाद में जाते हैं, फर्स्ट इसको हम डिसाइफर करके. There's a lot of, I think there's a lack of self accountability. What that breeds is when you don't have guardians or somebody to teach you what, the whole, especially right now, the self-help gurus that tell us love the way you are.
that means that there's no space or room for you to be a better person, and then you overlook a lot of things that you are doing to And a isolate lot of yourself in misconstrued, relation. Yeah. a lot of misconstrued philosophies like go with the flow. We go with the flow was all about leaving control, losing control, not, Not embracing what's self-harm, happening to. not Yeah, it's not. not self-harm behaviors that will make you feel more alone, more isolated than what you felt before. And also not, it didn't mean idleness. It didn't mean inertia. It didn't mean inaction. कि कुछ करो ही ना. Just let yourself go with the flow. Yeah. इसके दो हिस्से थे ना. Right. अगर evolutionary point of view से भी देखा जाए, Yeah. तो loneliness की एक रीजन थी ना. लोनलीनेस हमें रिफ्लेक्शन के लिए टाइम देती है, एनालिसिस के लिए टाइम देती है. लोनलीनेस का जो डिस्कम्फर्ट होता है, इट पुशेस अस टू सीक बॉन्ड्स विद पीपल, जिससे कि ग्रुप्स बनते हैं, ट्राइब्स बनती है, सोसाइटीज फॉर्म होती हैं. एंड यू नो वी इट पुशेस अस टू बी एबल टू लिव इन बिगर कम्युनिटीज and adjust to newer technologies, newer lifestyles हमें ज्यादा adaptive बनाता है. फिर गॉसिप, जिस तरह वो हरारी भी कहता है कि गॉसिप का भी एक फंक्शन है ना, कि इनसाइट्स एक्सचेंज हो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, वैल्यूएबल, नॉट उसको वो क्या एक लफ्ज देता है कि नॉट आइडल चैटर, बट एक्सचेंज ऑफ इनसाइट्स. For trauma healing or going through the process of trauma healing, there's a lot of loneliness that is part and parcel of that as well. And it can actually be quite effective for you. So I completely understand and I'm on board with you on that. Okay. What do you think we should do if somebody has prolonged experiences of loneliness? And we don't mean solitude, because solitude itself is voluntary. But loneliness is a lack of social psychological connection to, and a lack of supportive mechanisms that you find around yourself. So what do you think just generally? I know that it's going to be a very long talk and this is just a short Kickstarter. Maybe we'll have more talks on this later on. But what do you think in your client work as well, if you want to maybe reference that in an anonymous way? What do you think? How can it be helped? And what are some strategies that we can use to be less lonely? अच्छा, Khala, उससे पहले तो I would like to take a psychological overview of the problem, where it stems from. जब हम उसका psychological ले लेंगे overview, तो फिर हम उसकी remediation पे भी जाएंगे. अच्छा, psychological aspects, एक तो just like you mentioned, childhood trauma. Neglect by primary caretakers can lead to a lowering of self-esteem, self-image poor, sense of self poor. So हम external validation बार-बार चाहते हैं. हमें पता ही नहीं होता कि हमने खुद को कैसे वैल्यू करना है. हमें अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी प्रेजेंस नहीं मिलती. उस सूरत में भी, even if there's a world out there for you, waiting for you, you do not know how to connect with it. Because internally आपके अंदर की भी तो दुनिया होती है, वो खाली हो तो फिर आउटवर्डली भी आपको लोनलीनेस ही फील हो. इसके अलावा बचपन में your attachment styles, for instance, the way you attach to the world and to the world around you and with the things and with the people around you. अगर बचपन में आपका attachment style insecure हो गया, और आपका secure attachment style, you do not know how to securely attach to the world around you, फिर भी ये problem आती है. Problem of loneliness: A, you find it difficult to establish relationships. B, you find it hard to maintain relationships. C, even if you have good relationships, you do not know how to recognize them or enjoy them. तीसरी चीज, if you have gone through any kind of trauma or abandonment, so trust issues develop हो जाते हैं. You hesitate from building newer connections. You mistrust the ones you already have. इसके अलावा maladaptive coping skills, anger develop हो गया, violent tendencies आ गई हैं, avoidant tendencies आ गई हैं, antisocial behavior आ गया. They also lead to a lack of social activity and social isolation. अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी एक बात बताना चाहूंगी कि जो ट्रॉमा का लफ्ज होता है,
हमें वो इस्तेमाल करते वक्त बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए कि व्हाट इज ट्रॉमा एंड व्हाट इजंट ट्रॉमा, बिकॉज हर ट्रॉमेटिक इवेंट ट्रॉमा नहीं होता। तो उसकी जब हम उसको डिफाइन ही गलत लेंस से करेंगे तो हम प्रॉब्लम को समझ भी नहीं सकते। इसके अलावा जो आखिरी रीजन इज द वन दैट आई ऑलरेडी मेंशन्ड, इट्स अ जनरल आइडलनेस एंड इनर्शिया टुवर्ड्स मेकिंग अ डीपर एफर्ट। अगर आप इटिमोलॉजी भी देखें ना, फ्रेंडशिप की, कनेक्शन की, तो होता है कल्टिवेट, बिल्ड, ग्रो, Nourish. Yeah. ये सारे प्रोसेसेस हैं, ये बटन ऑन एंड ऑफ नहीं होता फ्रेंडशिप। Yeah. Yeah. सो वो भी समझना जरूरी है। अच्छा, अब हम यहाँ से आ जाते हैं इसकी रिमीडिएशन पे। अच्छा, बहुत सारे स्टेप्स हैं कीपिंग इन माइंड। एक तो पहले तो आप सोसाइटी को समझें, फिर अपना साइकोलॉजिकल मेकअप देखें कि कैसा है, और उसकी लाइट में आप लोनलीनेस को कैसे काउंटर कर सकते हैं। छोटे छोटे कुछ स्टेप्स हैं जो आपने बताया कि जिस तरह क्लाइंट वर्क में अगर मेरे पास कोई लेके आता है एज अ प्रेजेंटिंग इशू ऑफ लोनलीनेस, तो मैं उसको क्या बताती हूँ। सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड। जो सोशली अडेप्ट लोग हैं, जो वेल सोशलाइज लोग हैं, उसको ऑब्जर्व करें। सो व्हाइल ग्रोइंग अप आई हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ knowing a few people who were excellent at building alliances with people. Within 10 seconds उनको लोगों के साथ ओपन अप होना, बात करना, अलायंस बिल्ड करना आता। तो जब आप उन लोगों के ट्राई टू हैंग आउट विद दोस पीपल, ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट दे डू, उनकी इंटरेक्शंस को क्लोजली देखें। फिर इतनी छोटी सी एक चीज है कि practice a good introduction. You'll be surprised how many people get rattled when you ask them to introduce themselves, especially if they complain about being socially isolated or nervous. So you have to, but if the introduction, if that initial ritual of connection is rehearsed, then it will allow you to navigate conversations and navigate that social space with less nervousness and with less shyness. एक ये हम उसमें एक तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं चीज। फिर जनरली भी ओपन ओपन, अच्छा अब एक मुश्किल लफ्ज है करना, कॉम्प्लीमेंट पीपल अराउंड यू। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, एक्नॉलेज देम। Yeah. क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर जो लोग वेल सोशलाइज्ड होते हैं, उनका ये होता है, दे आर वेरी वार्म, दे आर ओपन, and they have the ability to create an environment around them which is very comfortable and easy. क्योंकि वो बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलके कोई छोटा ना महसूस करे। Yes. तो we bond over relatability and vulnerabilities, not over our resumes. Yeah. हम जितने ऑथेंटिक सेल्फ अपना लेके आए ना कॉन्वर्सेशन में, और अपना पोर्टफोलियो ना लेके आए, तो पीपल आर जनरली वायर्ड फॉर कनेक्शन। Yeah. Why wouldn't they? हर एक की अगर सारे ही टुगेदर अलोन है तो ख्वाहिश तो होती है सबके अंदर बॉन्ड करने। तो अगर if you put them at ease, if you make people feel seen, heard, visible, cared for, at ease, um, not judged, तो फिर लोग generally they tend to open up because there is this desire to open up। हमारे अंदर, सबके अंदर desire। एक और एडवाइस मैंने किसी और की सुनी थी, मैं उसको रॉन्गली एट्रीब्यूट नहीं करूंगी, आई थिंक इट वाज बेन फ्रैंकलिन, बट मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है कि मे बी इट वाजंट हिम। एक ये बड़ी अच्छी एडवाइस थी कि इफ यू गो टू अ न्यू प्लेस, सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, सो एक अच्छा वे टू इनिशिएट कनेक्शंस इज कि आस्क पीपल अराउंड फॉर स्मॉल फेवर्स, डूएबल फेवर्स, छोटे छोटे जो वो कर भी सके। अब 10 में से कोई 8 लोग तो फेवर्स करेंगे। जब वो करेंगे फेवर्स तो आपको यू विल बी ऑब्लिगेटेड टू रेसिप्रोकेट। जब आप रेसिप्रोकेट करेंगे, दैट विल इनिशिएट अ सीरीज ऑफ इंटीमेट एक्सचेंजेस लीडिंग टू डीपर बॉन्ड्स। ये भी था। फिर एक और भी किसी की एडवाइस थी कि इफ यू गो टू अगेन न्यू प्लेस, सिटी, यूनिवर्सिटी, एनी प्लेस, तो वहां के जो हैंगआउट्स होती हैं, कम्युनिटीज होती हैं, क्लब्स होती हैं, वहां पे विजिट करें। यहाँ तक तो बात हमने सुनी, लेकिन उसकी एडवाइस ज्यादा अच्छी थी। वो ये थी कि विजिट दोस प्लेसेस अगेन एंड अगेन, द सेम प्लेसेस, बिकॉज जब आप जितना रिपीटेडली जाएंगे उन फेमिलियर स्पेसेस में, आप अगेन डीपर एंड मोर
meaningful connections बनाएं. Absolutely. छोटे Also, I छोटे think हाँ contacts traveling in itself gives everyone the opportunity to share shared experiences that you have. So, and shared Absolutely. experiences build that kind of connection that sometimes due to our circumstances or due to our upbringing or due to just the life that we've had, that we haven't had the opportunity to create those linkages. So I think that's absolutely amazing. Thank you, Maneeza. I actually do believe that these suggestions are quite to the point, and I think they're easy for anyone like listening to implement them in your life as well. There's literally इतना मुश्किल नहीं है इसमें कोई उस तरह And से even revisit people from your past. Sometimes you've known people for a long time and then वो कहीं गुम जाता है वो contact. yeah Contact गुम जाता है कि you get lost in the भीड़. You get yeah, lost in the crowd. absolutely Reconnect with people around. okay. Absolutely. With that message, Munize, thank you so much for your time, for especially on Labor Day when everyone's taking their day off. So thank you for that. But it was lovely It was a talking to pleasure. you. And It I was do look lovely talking forward to to you. having more